एन ग्राम लैंग्वेज मॉडल। तो इसमें ना हाईली थोड़ा मैथमेटिकल चीज़ें बताया गया, दैट स्टैटिस्टिकल लर्निंग प्रोसेस। सो इसमें क्या है, एन ग्राम इसलिए बोला कि पहले 1 ग्राम है, फिर 2 ग्राम है, फिर 3 ग्राम है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे, पहले आप एन ग्राम समझ लीजिए, फिर 1 ग्राम 2 ग्राम कैसे होता है वो बताएंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड योर एन ग्राम। सो स्टैटिस्टिकल जैसे ही बोले, इसमें लेट यूज मैथमेटिक्स इज टू बी इन्वॉल्व है। So यहाँ पे in the solution for finding many problems in the NLP, that statistical challenges language processing techniques is to be used for what? Optical character recognition and spelling corrections। वो तो आप देख ही रहे, character replacement, उसके बाद speech recognition, machine translation, then POS tagging and parsing। Then next is your statistical technique can be used for the disambiguate the input। कोई ऐसा input हो गया है तो they can be used also for select the most probable solutions। and a statistical technique depends upon the probability theory, ठीक है। and they are able to use a statistical technique because they need to corporate with the collection of collect strategies। So corpora should be the big enough to capture the required knowledge, ठीक है।